Yes. Hi, Mithila. How are you doing? Hi, I'm very good. How are you? I am doing fine. I'm doing fine. Thank you so much for joining us on Bollywood Live. It's a pleasure to Thank have you. you over Thank here. you. Sorry it was a delay, but thank you. Thank you for having The, me. yeah, the lockdown is such. We all making best with this situation, so we can understand. Yeah, and there are long lines which we have to follow, so You that have takes a while. to stay Yeah. safe. You have to do all that. So I hope you Yes, got all your items on your grocery. I heard you went to do grocery yes, shopping. yes, yes, Yeah, yes. because I did. I did. I did. आजकल सब कुछ मिलता नहीं है. So you never know about that. आजकल नहीं मिल रहा है वो तो है, लेकिन जो भी मिल रहा है वो लेकर तो रख रही हूँ। तो चलो, अच्छी बात है. हाँ। So what are you doing in these days to keep yourself busy? How is lockdown treating you? बस What are you यही doing? बाजार जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। No, no, I'm just kidding. To keep myself busy, I've been working out. I have been relearning Kathak. I have been going live on Instagram. पढ़ रही हूँ या फिर I'm watching binging on things finally, which I was not able to do. तो Ah, चल रहा है as usual. That's the so usual. that is what we are all doing. What are you watching? Any recommendations for your fans? Anything I exciting? I am currently watching Killing Eve, which is fantastic, and I think Very everybody should nice. watch it. It's Very very nice. very good. Very nice. Yes. Both Sandra Oh and the lady who plays Villanelle. I do not know her actual name. I They am are fully crushing amazing. on Jodie Comer. She is phenomenal. She is Phenomenal. phenomenal. And of course, the writer, Phoebe Waller-Bridge, I watched her show Fleabag, and she was just out of this world. तो इसीलिए और मैंने पढ़ा भी कि एमीज उन्हें इसके इस शो के राइटिंग के लिए ज्यादा मिले हैं तो मैंने कहा ये तो देखना ही पड़ेगा और मतलब मैं Mhm. क्या बताऊं आई हैव नॉट स्टॉप्ड वाचिंग इट सिंस आई स्टार्टेड या ब्लोनर. स्पीकिंग ऑफ फिनोमिनल, आप खुद काफी फिनोमिनल हो मिथिला. आपने आपकी वेब सीरीज पूरे इंडिया में बहुत फेमस, इंडिया के बाहर भी फेमस है. चाहे वो गर्ल इन द सिटी हो, लिटिल थिंग्स हो, अभी ऑफिशियल चुकिया किरी. Yeah. Yeah. So, you are one of those, what do you call it? मैं कहूँगा कि one of those rare actresses जो वेब स्पेस में पॉपुलर होके वेब स्पेस में स्टारडम हासिल करके फिर आप फिल्मों में आई. तो ये कैसा हुआ? बिकॉज इसके पहले किसी एक्ट्रेस ने ये चीज नहीं किया. यू हैव सेट अ प्रेसिडेंट हो गया. आई थिंक इट हैपेंड ऑर्गेनिकली फॉर मी क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तभी मुझे यही पता था कि मुझे एक्टर बनना है तो जो भी ऑडिशंस हो रही थी उस वक्त मैं वो सारे ऑडिशंस कर रही थी जहां जहां से मुझे कॉल्स आ रहे थे वहां जाकर मैं ऑडिशंस कर रही थी तो वो किसी भी चीज के लिए हो या एड्स के लिए हो या तो वेब शोज के लिए हो या तो टीवी शोज के लिए हो आई हैव ऑडिशन फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स so obviously I've auditioned also for films but out of all these things ads started rolling but more than anything my web space even web space as itself also started growing so I think वो या वेव जैसे बढ़ रही थी मैं उसी वेव के साथ आई थिंक आई वाज आल्सो स्विमिंग थ्रू इट और जब वो बूम शुरू हुआ तभी हम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे या यू हॉप ऑन एट द राइट टाइम. फिल्टर कॉपी के साथ मैं एक शो कर रही थी तो इवन फिल्टर कॉपी एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट वी हैव दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी हम दोनों को पता नहीं था कि वेयर दिस विल गो बट आर इक्वेशन वर्कड फॉर अस सो वी सेड ओके लेट्स कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर फिर हमने स्केचेस किए फिर ध्रुव और मतलब ध्रुव और मैंने स्केचेस किए उसके बाद फिर लिटिल थिंग्स ऑन हैपेंड ऑन यूट्यूब फिर गर्ल में सिटी हुआ तो ऐसे करते करते अपने आप से सब कुछ रोल होने लग गया बिकॉज द वेब स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड थैंकफुली वी वर ऑल देयर व्हेन दिस रेवोल्यूशन हैपेंड सो वी गॉट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स फिर वैसे ही फिल्में भी होती हो ही रही थी मतलब फिल्मों में ऑडिशंस हो ही रही थी कि ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है लेकिन मेरी मतलब वेब करने से पहले मैंने फिल्म की थी खट्टी बट्टी नाम की जो 2015 में जी जी फिल्म जी, आई निखिल अडवाणी की अ, फिल्म. निखिल अडवाणी निखिल सर ने डायरेक्ट की थी एमए एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की थी और इमरान खान और कंगना रनौत थे उसमें तो मैं खान के छोटी बहन का काम कर रही थी उसमें तो वो पहली फिल्म थी जो जिसकी मैंने ऑडिशन दी और फिर
उसमें मैंने काम किया. लेकिन उसके बाद the web took off so much that people know me from the web first and then the films. Because as a lead actress, मैंने पहला काम कारवां में किया. In terms of Bollywood film, मेरा पहला काम मतलब बॉलीवुड फिल्म कारवां में था और मराठी फिल्म मुरंबा में था. जो कुछ after the web that happened. That's why people know that that's been the transition, which is not like undeniably that has been the transition. क्योंकि कट्टी बट्टी के बाद because everybody knows me from the web so much, कि essentially that was the route that I took. But like I said in the beginning, everything was very organic for me. ऐसे कुछ plan नहीं था कि वेब पहले करूंगी और फिल्म बाद में करूंगी, क्योंकि जब तुम इंडिया में स्पेशली जब बड़े होते हो, हॉलीवुड में अलग होगा, मतलब इन द वेस्ट इट मस्ट बी डिफरेंट ऑब्वियसली, बट जब व्हेन यू ग्रो अप इन इंडिया वांटिंग टू बी एन एक्टर, ऑब्वियसली बॉलीवुड इज योर फर्स्ट. तो के हरे बॉलीवुड में काम करना है. तो लाइक एवरीवन एल्स मेरा भी वही था गोल, और अभी भी है. लेकिन अभी बिकॉज नाउ आई हैव लर्नड दैट देयर इज सो मच अवेलेबल एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, कि मुझे ऐसे लगता है कि now there is no limit. अभी that only Bollywood is not your only option. So Bollywood के साथ साथ there is so much to do, which is why it's so exciting अभी. आपने एक अच्छी बात कही कि आपने तब शुरू किया जब ये बूम शुरू हो रहा था वेब स्पेस में. लेकिन क्योंकि ये उस वक्त बूम शुरू हो रहा था, इट इज नॉट द वेब स्पेस दैट यू सी इट टुडे, कि लोग अपना स्केड्यूल बदल के अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, मेरे को अभी ये शो देखना है. उस टाइम ये बात नहीं थी 2016-2017 में. सो वाज देयर अ लिटिल लाइक एन अनसर्टेनिटी, अ स्केरीनेस इन योर माइंड कि भाई मैं तो ये कर रही हूँ, लेकिन ये करके क्या होगा, क्या मैं अपना वो एक्टिंग वाला गोल हासिल कर पाऊंगी? ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी था आपके माइंड में? अनसर्टेनिटी नहीं थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जनरली करियर के बारे में थी, जो किसी भी फ्रीलांसर को होती है. तो या आप कुछ भी कर लो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी फिल्म चली जाए, कि पहले तुम फिल्म कर लो तो मतलब ब्लॉकबस्टर हिट होगी. सब एवरीथिंग दैट यू डू इज comes with an uncertainty. So you cannot, like, if you gamble on something, it's not, doesn't mean के ये तो बड़ा होने ही वाला. It is an experiment that that I wanted to do, that Filter Copy was open to doing. They gave me that opportunity. I took it up. It was just that. And like you rightly said, हमें पता ही नहीं था कि आज जो वेब में हो रहा है, ये 2015 जब हमने शुरू किया काम, तभी कोई आइडिया नहीं थी कि कितना going to take off like this. Maybe the makers knew it. Maybe they saw it. I personally, I speak for myself, मुझे नहीं लगा था. मेरे लिए ये था कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए, अगर वो इंटरेस्टिंग लगे तो लैप इट अप, दैट्स इट. और मेरा मोटो आज भी यही है कि या तो शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म या वेब शोज या वेब फिल्म, जो भी आए, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे, ये कंटेंट करना है, कंटेंट का हिस्सा बनना है, अगर ये लगे दिल से तो बस कर. It doesn't matter where it is. I would like to do films in different languages. I would like to do films outside of India. And why just films? Everything else, whatever opportunities available. तो मेरा यही था, जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा गोल यही था कि ठीक है, अगर वेब में मिल रही है एक अपॉर्चुनिटी. और मुझे इतना मजा आया था क्योंकि पहला मेरा जो शो था फिल्टर कॉपी के साथ, उसका नाम है न्यूज दर्शन. तो वो ऐसे लूजली जॉन ऑलिवर जो करते हैं उस पे बेस्ड था, वेरी लूजली, बिकॉज जॉन ऑलिवर एक लेजेंडरी, तो वो लेकिन दैट फॉर्मेट ऑफ अ शो इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू. एंड व्हेन आई वाज पिच दिस शो, आई वाज लाइक, भाई ये तो करना है, क्योंकि आई वाज वेरी एक्साइटेड. वी डिडंट नो व्हाट विल हैपन टू दैट शो, बिकॉज इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये वेब शो ये नया कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने कहा ठीक है ना, क्या होगा, देयर इज नथिंग टू लूज, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अरे मैंने इतना सारा काम किया, अब ये कैसे करूं, ऐसे भी नहीं था. मैं तो शुरुआत ही कर, और आई जेन्युइनली बिलीव दैट नो जॉब इज अ स्मॉल जॉब. और अभी तो मतलब जो भी whatever came my way, like I said, I was happy to lap it up if I found it interesting. So this came my way. I auditioned for him. ऐसे नहीं था कि मुझे फोन करके बोला ये स्क्रिप्ट है, ये कर.
मैंने ऑडिशन की उसके लिए, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने वो शो किया एंड पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब वर वाचिंग इट एवरीवेयर. So and when we finished that season, people asked for more. So we realized कि hey, लोग तो देख रहे हैं ये, मतलब it's not like it's not going to waste. People are watching it. There is an audience for this. So और then the rest is history. वो तो पता है आप. जब यू वर डूइंग दिस, जैसा आपने कहा था कि while growing up अगर एक्टिंग कहा जाए तो फिर लोगों के मन में एक ही चीज आती है, बॉलीवुड. सो while you were doing this, ये कभी आपके मन में ये ख्याल कभी आया कि इसके आगे बॉलीवुड फिल्में मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिकॉज एट दैट टाइम, अभी इंडस्ट्री बदल गई, इवॉल्व हो गई है, लेकिन 5 साल पहले थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग के लिए इंडस्ट्री तभी भी जाना जाता था. सो क्या ये ख्याल कभी आया मन में कि बॉलीवुड फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी? और जब कारवान मिली फाइनली, तब आपको कितना रिलीफ हुआ? जब मैंने वेब स्पेस में, मैंने ना कुछ भी ऐसे नहीं किया है कि ये करूंगी तो इससे ये होगा. मैं, इफ आई एम डूइंग ऑप्शन ए, then I'm not picking that option to move on to option B. I am picking option A because option A is interesting. बस. Okay. अगर उससे कुछ होता है तो great, but that's not the way I approach things. If something gets offered to me, if that itself looks interesting, then it's great. I've always said that I don't like to plan things. तो मैं ऐसे हो ही नहीं कि मैं ऐसे बैठ के strategize करूंगी कि इससे वो होगा, उससे वो होगा. मुझे beginning of my career, a lot of people had even told me, whoever, well wishers or like who thought maybe this advice is interesting. And I'm not saying this bitterly at all, but a lot of advice came my way that said कि तुम टीवी करोगी ना तो टीवी से फिल्में मिलती. लेकिन मुझे, मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं आया. इवन व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग, देयर वाज नो कंटेंट दैट लाइक रियली गॉट माय अटेंशन कि ये टेलीविजन पे करना है. द मीडियम वाज नेवर इम्पोर्टेंट फॉर मी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, एंड इट स्टिल इजंट. गुड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो वेब में वो कंटेंट मुझे मिल रहा था, मुझे चाहिए, मुझे जो पसंद आ रहा था वो सब वेब पे हो रहा था. सो इट ऑल जस्ट लाइक, आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. और फिर just because I was working on web doesn't mean my film auditions was like I had stopped them. तो भी on the side हो ही रही थी. So obviously when Carvaan happened, it took a very long time for them to get back to me. तो मुझे याद है कि say for example, I don't remember the timelines exactly, but say for example मैंने जून में ऑडिशन दिए, तो मैं रुकी हूँ 1 महीना हो गया, nobody got back, so I said okay, maybe ये तो चला गया. फिर उसके बाद somebody called me, said been shortlisted, but you have to do a look test. तो shortlist में भी कुछ 5-6 लड़कियां थी, और फिर उसके बाद we did a look test, फिर भी nobody got back to me, and then finally, तो उसमें ही in that span of time there was some आराम से 2.5 months that were passed, and then जब डिसीजन आया तो आई वाज रिलीव्ड कि चलो मिल गई फिल्म alongside DQ Salman and Irfan Khan. So obviously it was a relief, and I would still say that just because I do work on the web doesn't mean that I don't want to do films, and just because I'm doing films doesn't mean I don't want to come back to the internet. I want everything to. I'm very greedy as an artist. मुझे सब करना है. मुझे थिएटर भी करना है जो मैं कर रही हूँ, और मुझे वेब स्पेस में भी होना है, मुझे एड, सब जो whatever gives me an opportunity to be an actor, I will make the most of it. So yeah, मजा तो obviously आया when they told me that I was part of Carvaan, और उतना ही मजा आया जब people keep loving, उतना ही मजा आता है जब people keep sending us good wishes and good reviews on little things. So it's the same for me. It's equally important. Carvaan was a very heartwarming film, प्यारी फिल्म थी, और उसको शूट भी किया गया था ना, एक ऐसी ट्रैवल फिल्म जो आप लोग की जर्नी के साथ, एक्टर्स की जर्नी के साथ, हमें भी लग रहा, ऑडियंस को भी लग रहा था कि हम भी ट्रैवल कर रहे हैं लोकेशंस पे. इतनी प्यारी फिल्म थी. Let that being said, unfortunately, box office में वो इतनी नहीं चली थी. Was that very disappointing to you as an artist? That doesn't affect you as an artist. You take away the creative satisfaction. That's what I do. Because the thing is ना, क्या होता है कि as actors हमारे हाथ में ज्यादा नहीं कुछ होता in terms of like
कमर्शलाइजेशन वो हमारे हाथ में नहीं, वो हमारा काम करना है और फिर इट्स ऑल फॉर द ऑडियंस. You work, you give your 200% and then it's all at audience's mercy. तो और मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ. I think that is a part of the internet that I absolutely enjoy, कि वो सोचना नहीं पड़ता कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए. तो ये मुझे चॉपस्टिक के वक्त सोचना नहीं पड़ा. तो और कारवा के वक्त मैंने कोशिश की that I shouldn't think about it. पर मुझे like I don't my thought process automatically doesn't go in that direction. For me, my review is when an audience member writes to me or DMs me and says that they love my work. That is a great pat on the back for me. Obviously, people who put in money, of course, have to think about it. कल अगर मैं किसी movie को produce करूँगी, तो obviously I would want to know that my movie has earned that money. So of course, with due respect to producers and directors who do put in their money and effort. As actors, there's not much in our control in terms of money. तो अगर हमें काम करना है, हमें अच्छा काम करना है और वो ऑडियंस को दे देना है. उसके बाद जो होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट. तो क्या ये थॉट समवन आपने वेब स्पेस पे शुरू की थी, क्या उस वजह से आपकी ये थॉट प्रोसेस बनी है? और दूसरी चीज है, अगर कारवां डिजिटल मीडियम पे रिलीज होता तो क्या ज्यादा सक्सेसफुल होता आपको लगता है? I mean, it is on Amazon Prime and people are watching it. सीधा release before the theatrical release. I mean, I guess it was not. I don't, as an audience also, I don't look at Karwa as a commercial Bollywood film because it has that slice of life. It has that slice of life feeling to it. So maybe अगर directly web पे जाती तो शायद it would have worked. But let me tell you something. Chopsticks or Little Things or whatever that comes on Netflix, whatever I have been part of, I don't know how it does. It has done very well. I'm telling you, it has done very well. But the only way I know is when I get told, which is the same logic that I use for anything. So if people are DMing me, if people are putting up stories, if people are writing to me, emailing me, writing to me on Facebook, in whatever way, reaching out to me and telling me that they're watching the content, that is enough for me. So, वो जो भी हो, whatever content that I have been part of, if people have watched it and told me that they watched it and liked it, that is my review. So either way, it means it works the same way for me. I don't think about कि Little Things ने कितना पैसा बनाया अगर when it released on Netflix, or how much money did Chopsticks make when it released on Netflix. My monetary value is the pat on the back that I get, the review that I get from people, क्योंकि मेरा काम था acting करना जो मैंने किया, और अब now it's audience, the audience who has to tell me if they've liked it or not. So I think organically same thing. That's how it started playing with me on my mind. कि कभी मेरा my mind never went in that direction at all, because if tomorrow if my film does really well and nobody likes my work in it, it's not worth it for me, right? It doesn't make sense. Yeah. So, True. Yeah. True. Acha, what I really wanted to ask you is, when you're doing all this, say you have got an offer of a big commercial masala film, like say a Rohit Shetty film or something like that, right? It's hard, but who knows? And will your fandom, meaning the people who follow Mithila Palka on the web, will they accept you in such a role because they are used to seeing this kind of work from you? ये जो slice of life work है, ये जो will they accept you in that kind of role? Do you think so? I should try and see. Because I've never tried it, I wouldn't know. Also, I don't know if it's always the content that works for me. Having said that, it doesn't mean that I don't want to do commercial Bollywood films. Just because I've not done one doesn't mean that karni nahi hai. Like you said, you're open to all options. I am open, and I hope that my audience is also open to seeing me in different lights. That's what I wanted to do.
I do get written to के चलो अभी कुछ अलग करो, अरे काफी हाँ देख लिया अब, little things और Girl in the City काफी देख लिया, अब कुछ नया दिखाओ. तो it's not like they are also they are not very rigid about it, seems like. But पता नहीं, जब करूंगी तब पता चलेगा if they like me in it or हाँ. not. Okay, and very important thing I need to know is about your fan reactions, because some, I was speaking to some TV actors before and they have got some scary episodes in fan reaction. जैसे कि उनको मॉल में कुछ आंटी लोग उनको पकड़ के बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों सता रहे हो, जबकि वो लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं. आपको कभी ऐसा कुछ इंटेंस एक्सट्रीम फैन रिएक्शंस मिला आपके कैरेक्टर्स के लिए? Uh, no, because I've always done relatable characters. Kavya, Indrayani from Muramba, even Tanya from Karma. There is they've all, or even Meera from Girl in the City for that matter. They've always been very like, अरे ये तो अपनी जैसी है. But once I've gotten a wacky reaction was when one day I just Chopsticks had just released and I wasn't even thinking of it because I had just gone out to meet friends. और यही दादर में हुआ ये किस्सा कि मैंने ऐसे कार पार्क की मेरी, and my friend and I got off and we were walking towards a restaurant. And then this lady passed by and said, ध्यान रखना ये गाड़ी यहाँ से भी चोरी हो सकती है. मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे पता ही नहीं चला. तो मुझे कुछ मतलब I couldn't understand why she said that to me, because that it's not like it's a new area. So I have parked, I mean, Dadar is grown up, so I know that area and I have, it was near Shivaji Park. तो ऐसे तो नहीं था कि मैंने नो पार्किंग में पार्क की है, क्योंकि I don't break rules. And वो I know for a fact that I don't. And मैंने कहा कि मैं तो चेक करके यहाँ पे पार्किंग किया है और मैं पहले कर चुकी हूँ यहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क, तो ऐसे तो नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, तो ये ऐसे क्यों बोल रही है. सो I had this this barrage of thoughts in my head and a completely confused expression on my face. And then she looked at me and said, वो जैसे मूवी में हुई थी वैसे गाड़ी यहाँ से भी हो सकती है चोरी. Oh my God. Okay, relief. मेरी गाड़ी सच में नहीं जाने वाली. But yeah, that was the only time that something like that happened. But otherwise, they've been very like, we love you, and why don't you get married to Dhruv? Those kind of things. अच्छा, वो सब भी आती है. Okay. अच्छा, quickly we have got a rapid fire round for you, because अभी हमें पता नहीं कि आप कितना रियल लाइफ में कितना ट्रैवल करती हो, लेकिन क्योंकि आपने जो काम किया है उसमें लगता है कि आप काफी ट्रैवल करती हो, चाहे कारवां हो, चाहे आपकी गाड़ी चोरी होती है, तो ऐसा लगता है कि आपने ट्रैवलिंग किया हो. तो इसलिए we have got a rapid fire travel round for you. So let's start. First question, what has been your favorite place to travel so far, and any of those memories you would like to share? I think I love going to LA more because my sister lives there, my older sister, and that's the only way I get to see her. So I love going there, and one of my one of my fondest memories of LA was I had taken up an acting workshop once when I was visiting her. And it was my first method acting class. तो वो वाली फीलिंग है ना कि आप हॉलीडे पे हो लेकिन आप काम कर रहे हो and you are independent in a different country. वो वाली फीलिंग मुझे इससे पहले कभी आई नहीं थी. The way I felt in 2014 when I was in LA. And then since then LA has like a different special place in my my heart, because every time I go there I catch up with those friends I made in class. So it feels like I have my own life in a different country. So it just also, my sister lives there. Nice. Okay. Second question, what do you prefer? Solo traveling or traveling with a partner or your family? Traveling with someone, whether it's family or a friend or anyone. I like to travel with someone. I've never traveled solo. I know a lot of people say that you should do it, but I'm such a chatterbox. ये तो आपको पता चल गया कि मुझे I constantly need someone to talk to, वरना मैं पागल हो जाऊंगी. So I like to have somebody. I know that on solo trips you can make new friends, but I'm a very social person, so I'm open to making friends either way. Yeah, even if I've gone with 10 more people along with me, I will still be able to talk to more people
beyond those 10 people. So I know that about myself. So always with That, people. that we are even sure you can do that. Okay, third one. Which, according to you, is the most romantic destination in the world and why? Most romantic destination. यार बड़ा पता नहीं. I don't know. But the most cliche is Paris. But to tell you a secret, I want to go to Paris with my sister. Because while we were growing up, my sister and I had promised each other कि Paris अगर कभी गए तो तुम और मैं एक साथ जाएंगे. For I don't remember why we made this pact, but हमने decide किया था कि it's a place that both of us will go together. And although it comes with like a romantic connotation to it, my sister and I just wanted to do it for ourselves. So yeah. Okay. What is the quirkiest thing you have ever done while on vacation? Quirkiest thing. Oh my God. I've actually watched a film in a cemetery. Okay, you have to tell us that story. Damn it, why am I forgetting the name of the film? It was a very funny, very, very funny film. Robbie Williams was in it. Robin Williams. Yes, and I couldn't, damn it, I can't remember the name. But my sister said, I was visiting my sister, and my sister was like, you know, तुम यहाँ पे इतनी often आती हो कि तुमने वो क्लीशे वाली चीजें तो की है कि तुम यूनिवर्सल स्टूडियोज गई हो या डिज्नीलैंड गई हो. You know, one of those things, all of those things you've done. So now I want you to experience something new. So we will go to the Hollywood Cemetery and watch a film. So we watched. So it बड़ा ही प्यारा concept है. They have a big screen and a projector, and everybody packed the picnic. Obviously, that screening is at 9 o'clock in the night. So the lights I have, you know, they are all dimmed, or if the only lights that you see are the street lights. Little scary also, but because there are so many people, it's not as scary. But everybody packs the picnic. सब अपने अपने picnic mats ले जाते हैं. कुछ crackers, cheese, सब चीजें ले जाते हैं. Sandwiches. They pack their own picnic. And अपने अपने mats पे बैठ के everybody is watching the film. It's great. On the grass you sit and you watch the film. मुझे लगा आप लोग को छुप के cemetery में घुस के फिल्म देखा. This is something that is done over there. It is. It's a thing. Achha. It's a thing. Yeah. And it's an actual cemetery. Yes, it's an actual cemetery. Okay. I am not like बैठता होके कुछ quirky करे. I'm a good girl that way. तो कैसा था भूतों के साथ फिल्म? मजा आया because I was watching a comedy film. I don't know why I can't remember the. Mrs. Doubtfire. Huh? No. Not Mrs. Doubtfire. If I remember, I'll text you. But I can't remember the name. It has a song called "We Are Family." If anybody knows this, I cannot remember the name. I know I've seen this film. I mean, I cannot remember the name. If anybody in the audience, if you know the name of the film, please tell us. I don't know why I'm blanking out. Fully blanked out. Birdcage, something like that. It had its typical dance to that We Are Family also. Yes. चलो दोनों को याद नहीं आ रही इस पर. Audience, please help us. Okay. How many photos on an average do you click while on vacation? Oh my God, I don't click too many. My father always complains. I mean, I click, but like not as many as are expected out of me. My father always tells me कि अभी तुम यहाँ जा रही हो ना तो photos भेजना. और मुझे कभी याद नहीं रहता because I am too busy either chattering away with someone or just like taking everything in, all the beauty in. तो फिर ना मैं भूल जाती हूँ और my father is always so disappointed कि यार हमें तो जाने नहीं मिल रहा है तो तू photos तो भेज. तो मैं इतने photos नहीं खींचती हूँ. I've realized that.
Like I would seem like a person who clicks a lot of pictures, but I don't. Unless somebody else has clicked them for me, then I have enough Okay. photos. Oh. But And the last one, your favorite childhood memory from a holiday. my favorite childhood memory was when my parents and we went to Rishikesh. My father is a very like he loves to travel, he loves to trek and all, and he's always like in his younger days used to go there. So we went to Badrinath, and in Rishikesh we were living in an ashram. So we used to we used to go to a big hall where everybody used to get food together. So there was no hotel or anything. And that for some reason has been a very cherished memory for me. Okay. Acha, so before we wind this up, Mithila, your fans, there has been a lot of queries, which the most Yes. common one has been little things folk कब आ रही है? यार अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आप प्लीज मुझे बताना. ये लोग पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता हाँ ये नहीं लोग मैं उन्हीं से कह रही हूँ कि अगर आपको किसी ने बताया कुछ तो मुझे आप जरूर बताना क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है. लेकिन बनने तो वाली है ना We वो तो don't know. definitely We अच्छा that really also you don't. don't know. We Okay. don't know. And now, even if we knew in this lockdown, anyway, who knows? Hmm. So until at least before the lockdown, we didn't know. And now, तो पता नहीं सभी के काम रुके हुए हैं in every sense. So we don't know. Anyway, so we hope that it comes. But before winding up, do you have a parting message for your fans during lockdown? Some are telling क्यों extend हो रहा है, क्यों extend हो रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है. Do you have a message for them? I would just like to say that it's very important, guys, that we stay at home. I know it is very frustrating on some days, and I absolutely can relate to that feeling. But I think if we want to get out for a good amount of time, we have to go through this for at least a little while. So it is important that we all help each other by staying at home, and just so that all of us can now can all of us are able to travel very soon and get out of our houses very soon. So I think just to support each other, let's face it, it's important. I know they're only extending the date, but what do you do? इसीलिए तो घर पे बैठो अगर घर पे नहीं बैठोगे तो और भी एक्सटेंड होगा ये तो इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू सिट एट होम एंड स्टे Thank सेफ. you. Beautiful words, Mithila. It was amazing speaking to you. Lovely, lovely Thank you. conversation. And you stay safe too. And I hope next time we do this, we do the interview in person. We don't have to use Yes. technology. Yes. Yes. So stay safe and bye bye. You too. Bye bye.